in my whole extended family, not just family, I am the first chartered accountant. I lost one of my family members during the second COVID wave. CA course is an easy course for those who are disciplined. Just before the examinations, feel that कि भाई अब सब भूल चुके हैं. उस टाइम हमें बहुत लेफ्ट आउट सा फील होता है कि कैसे अब ये इतनी मोटी मोटी बुक्स, नोट्स, रजिस्टर्स कैसे फ्रॉम स्क्रैच रिवाइज करें. Plan their work and work their plan. अंदर से मैं बहुत वो था, डाउन फील कर रहा था कि एक्सपेक्टेशन बहुत आई थी एग्जाम से, बट 70 मार्क्स का ही हो पाया. बस 30 मिनट बचे हैं अब तक एग्जाम में. I welcome you all to this session that we are having a small session with a newly qualified chartered accountant. We have amongst us All India rank 19 CA Akarsh Jha. He scored All India rank 19 in CA final and मेरे subject cost of finance SFM SCMP में he has got 74 and 65. Please welcome. I would like to introduce you formally. ये सारे CA intermediate students हैं. So and apart from that हम लोगों को virtually और भी जनता देख रही है और आगे देखेगी. Now first of all let's talk about your journey. तो दो मुझे पता है पीछे की जर्नी, बट लेट हिम स्पीक इन दिस रिगार्ड कि भाई आपकी क्या शुरुआत से आप स्टूडियस थे, नॉटी थे या मतलब एवरेज स्टूडेंट थे? व्हाट वाज दिस सिनेरियो? So first of all, thanks to Ashish Kalra sir for introducing me in front of so large number of students and giving me the chance to speak in front of everyone. So let's be very honest, I was always a sort of those kind of students who used to occupy some corner seats and never got the chance to address so huge crowd of smart CA students. So as sir questioned me about my journey, so since class first, I would say I was kind of academically good student who used to do every time good in academics. So after taking commerce in class 11th and having decent academic background, CA was quite an obvious choice for me. So eventually class 12th I scored good again, I guess around 97%. So again CA was a but obvious choice. So CA was but obvious choice. कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स में अगर आपको अच्छा भाई आगे करियर बनाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ गुड चॉइस, बट ऑब्वियस सी बात है. एंड नाउ एकेडमिकली यू वर स्ट्रॉन्ग. आपके खानदान में आपसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं आपके खानदान में, आपकी फैमिली में? एक्चुअली हमारी साइड ऐसा है कि ईदर स्टूडेंट्स टेक साइंस और ह्यूमैनिटीज. we don't see a trend of students taking commerce in class 11. So in my whole extended family, not just family, I am the first chartered accountant. So that is indeed a big thing for the entire family. This is nice. And आपके पापा और आपकी मम्मी क्या करते हैं? They are professionals क्या? So my father was also commerce student. He didn't do CA of course. Right now he's a government employee in Ministry of Defense. My mother is a housewife. Great. So moving on to the next question. Now you joined CA. CA was a but obvious choice. You were a bright student since your childhood. Commerce के बाद एक अच्छा करियर बनता है CA में. तो फाउंडेशन में आपने दिया, फाउंडेशन में आपने पढ़ाई की और फाउंडेशन में भी शायद आपकी रैंक आई थी. What was the rank in foundation? 13. 13. All India rank 13 in foundation. फिर इंटरमीडिएट में भी आपने मुझसे क्लास ली थी एंड ग्रेस ऑफ गॉड 80 प्लस मार्क्स थे. 85. तो 85 मार्क्स. एंड व्हाट वाज द रैंक इन इंटरमीडिएट? I secured rank 40th in 40th. intermediate. ग्रेट. ऑल इंडिया रैंक 40th इन इंटरमीडिएट. सो अब आज की डेट में वैसे फाउंडेशन में रैंक्स नहीं आ रही हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल में आती हैं. तो ग्रेट, यू हैव बीन एकेडमिकली मोर देन एन एवरेज स्टूडेंट. But still there are certain things actually still अगर बोले तो कुछ ना कुछ भाई पढ़ाई करते करते कुछ ना कुछ challenges आते हैं.
भाई इवन दो यू से दैट एकेडमिकली हमेशा से आपने बेटर परफॉर्म किया हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो सीए की जर्नी 4 से 5 साल भाई फाउंडेशन से लेकर फाइनल अभी तक 5 साल थी, अब थोड़ा कम हो गई, अब 4 साल के आसपास हो गई है। अगर हम लोग बोलें प्रेजेंट में जो ये स्टूडेंट्स जो 2 साल की आर्टिकलशिप है, आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप थी, आपके 8 पेपर्स थे, इनके 6 इन इंटरमीडिएट 6 इन फाइनल। सो एज सच आई वुड लाइक टू आस्क यू, एंड then these kids, these students who are attending the class, they will also put in their questions, their personal questions, but I'll put a general question. In these 4-5 years, did you face any challenges? Exam day पे क्या हुआ वो बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कोई चैलेंजेस आए, प्रिपरेशन के टाइम या अदरवाइज लाइफ में कुछ चैलेंजेस जिनको कि आपने अगर ओवरकम किया तो कैसे किया? So that is a part and parcel of life, that challenges you will definitely face in this huge 4 to 5 years of CA journey. So I started it in 2019. Then till foundation everything was quite without so much challenges. I cleared my foundation. Then in intermediate, of course, when you are about to appear for 8 exams, so that time there are challenges, there are tough 8 exams. Every exam is a huge challenge in itself. So during the course of preparation, I took around 4 to 5 classes from coaching, and rest 3-4 I did it by self-study. So at the time of my intermediate exam, which was scheduled to be happening in May 20, so we had our COVID first wave in, I guess, starting from March 20. So eventually our attempt got postponed firstly, then ultimately it got skipped to November 20. So I saw it as an opportunity to score a rank, because I thought it's difficult for me to study all 8 subjects and revise all 8 subjects that time in 9 months, because from starting I was not that serious towards my examination. So luckily I got extra 6 months. Then I utilized those 6 months to the best of my advantage. Then challenge, as far as challenges are concerned, during that COVID wave, still remember that mammoth casualties that we must all have witnessed during those days in 2020 as well as 2021. So I lost one of my family members during the second COVID wave. Actually, that was after my intermediate exams at the start of my articleship. So that was a very difficult difficult situation to overcome for not just me but for my entire family. And then from challenges point of view, I think the last phase of your time period just before the examinations, when you are done with the classes and when you are starting your revisions, that time every student, not just me, every student, what they feel that कि भाई अब सब भूल चुके हैं हम जब आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्लासेस हम बुक्स खोलते हैं फॉर रिवीजन, उस टाइम हमें ऐसा ध्यान नहीं आता कि हमने सिंस ऑलरेडी हमारी क्लासेस 6-7 मंथ्स पहले निकल चुकी हैं, उस टाइम हमें बहुत लेफ्ट आउट सा फील होता है कि कैसे अब ये इतनी मोटी मोटी बुक्स, नोट्स, रजिस्टर्स कैसे फ्रॉम स्क्रैच रिवाइज करें. तो दैट टाइम इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, अगर ऐसा नहीं है तो फिर देयर आर चांसेस दैट यू कैन फील पैनिक अ लॉट एंड यू कैन commit some big blunders which can ultimately affect your results. So again, this time during my CA final journey, my study leave started from June. So I had 5 months to prepare to revise my entire 8 subjects of CA final. So that time initially I also felt that कि यार इतना ये सब्जेक्ट तो मैंने 2 साल पहले कोचिंग ली थी, 2.5 साल पहले कोचिंग ली थी, अब कुछ ध्यान भी नहीं है. But when you start again studying and talking to your mentors, teachers and take appropriate support from your family members, तो उस time things go smooth and eventually अगर सब सही कर रहे हो आप, you are honest in your hard work and you trust God ultimately, then things are going to get better and better day by day. So same was there in my case also. Great. So now this was the challenges, like losing somebody near and dear. It's a challenge, no doubts about it, you know. And then usse coming out of it. Then apart from that, in 5 साल में आपने कहा भाई otherwise भी challenges भाई आते हैं, तो family support, mentor support, ये आपको get through करेंगे और आपका ultimately your discipline and your focus and your consistency will help you achieve your goals. But I would like to ask you then, exams. Let's talk about maybe even intermediate exams or even final exams. Any of these exams में did you feel at certain point of time कि यार भाई हमसे ना हो पाएगा, मैं
रैंक नहीं ला पाऊंगा। जैसे फाउंडेशन में आपने रैंक लाई, यू नो एक एक्सपेक्टेशन सी होती है कि भाई फाउंडेशन में लाया तो इंटर में लाएगा, इंटर में लाया है तो फाइनल में लाएगा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। इफ समथिंग हैपेंड टू यू, शेयर इट अक्रॉस, बिकॉज यू सी एक एक्सपेक्टेशन थियरी होती है। एक्सपेक्टेशंस खुद की अपने से एक्सपेक्टेशंस और अदर्स की, आपके फैमिली मेंबर्स, यू नो उनकी एक्सपेक्टेशन। कई बार लोग एक्सपेक्टेशन को बर्डन की तरह लेते हैं, यार वो मुझसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विल आई बी एबल टू डू और नॉट। समथिंग लाइक दिस वाज विद यू एंड समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग एग्जाम्स और समथिंग, and how did you overcome that particular point? So I can recall two instances, one of intermediate and the second one is of CA final, which is very recent. So if I talk about intermediate, so it was my second exam of corporate and other laws. I took classes from Harsh Gupta sir, and the day just before my law exam. So there are two books, I guess. One is Corporate Law, Companies Act, and second is Other Laws. So there was huge syllabus to cover, and that time, that particular day, I was not feeling very good to study. So I saw Harsh sir's message on Telegram कि ऐसा पक्का हो रहा होगा बहुत स्टूडेंट्स के साथ कि इतना सिलेबस है, लेट्स स्किप आवर अटेम्प्ट, अगली बार पढ़ लेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये थॉट्स सबके मन में आ रहे होंगे, हो सकता है उस टाइम मेरे मन में भी आ रहे हो। बट सर का वो फिर मैसेज देखकर मेरे को लगा कि सिंस आई एम नॉट जस्ट द ओनली स्टूडेंट जो ऐसा सोच रहा होगा, अभी सबके साथ ऐसा ही होगा, तो let's try to utilize this particular one day to the best way possible, revise as much as possible. So I tried my best in my law exam and eventually it went well. So it was my decent experience of my law exam. But my second experience of overcoming challenges, that was in CA final, I guess 2-3 months back. So it was again my second exam, strategic financial management, जिसकी कोचिंग मैंने आशीष कालरा सर से ही ली थी। तो I had done my 3 revisions and I was fully prepared for my exam. So on the day of exam, I was confident. I went to the examination hall and sat in the exam. Then our invigilator distributed the question papers. We have our 15 minutes of reading time. So in those 15 minutes of reading time, I saw the question paper. Then from the first question till the 6th question, there was not a single question जिसमें I felt कि I am fully confident if I start doing this question, I'll do it in the first attempt. पूरा आई वॉज लाइक कि भाई क्या पेपर आ गया इतना मुश्किल से, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। एंड हमारा उससे पहले जो फर्स्ट एग्जाम होता है FR का, वो भी मतलब थोड़ा मुश्किल से आया था। तो देर आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम SFM कि इसमें थोड़ा रिकवर करना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरऑल एग्रीगेट भी हमको लाना पड़ता है और स्कोर ओवरऑल ठीक करना पड़ता है। तो SFM FR आर बेस्ट टू स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। FR ऑलरेडी जा चुका था, मैं SFM से उम्मीद थी। एंड 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम इन SFM एग्जाम, वो उस टाइम मैं क्या सोच रहा था वो मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट प्रॉपरली इन वर्ड्स, बिकॉज वो टाइम ऐसा था कि एक भी जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई अपने आप से थी, बट क्वेश्चंस देखकर लग रहे कि कौन से हैं कैसे हैं, ऑल्दो थे सब बुक के ही। तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। आफ्टर 15 मिनट्स आई स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चंस एंड आफ्टर 2.5 hours आई वॉज डन विद माई 70% ऑफ माई कंप्लीट पेपर। एंड फॉर द लास्ट 30 minutes आई हैड टू डू माई रिमेनिंग 30 marks पेपर। सो that 30 marks was that paper जो मुझे बहुत कम आता होगा, and I had very little expectations from the 30 marks paper. So what I did was I was अंदर से मैं बहुत वो था, डाउन फील कर रहा था कि एक्सपेक्टेशन बहुत आई थी एग्जाम से, बट 70 marks का ही हो पाया, बस 30 मिनट बचे हैं अब तक एग्जाम में। तो फिर क्या हुआ, आई टुक अ पॉज। ये चीज़ें मैंने अपने 2-3 दोस्तों को भी बताई, घर में भी आके बताई कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो आई टुक अ पॉज आफ्टर एट अराउंड 4:30, that is after 2.5 hours. So उसके बाद I took a pause. I prayed to God. I prayed to कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान एंड सरस्वती माँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना 30 marks का पेपर मेरा अभी भी बचा है एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली 30 minutes। एंड ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने कभी ना कभी करे थे, बट इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोज क्वेश्चंस। सो आई टुक 30 second pause. I prayed to God and it was like, it's still I get goosebumps when I recall those moments. I'm not lying, of course I don't have any reason to lie, but that time I literally felt कि someone is there, I can see in reality the God standing in front of me, actually helping me, trying to locate me, show me the answers, and I was actually able to solve most of the questions that were left out of those 30 marks, and I actually solved it in in first go. So that time मेरे को लगा कि somewhere I didn't deserve those 30 marks, but still God knew that I had worked really hard during my
2.5 years of those articleship period. So eventually it was some God's indication कि since you deserve it, so I'm helping you. Otherwise, if you was not a deserving candidate, I would not have helped you. But that time I solved those questions to some extent, and तो उसके बाद I felt कि ये तो सच में मतलब भगवान में बहुत ताकत होती है अगर सच में अगर उनसे कुछ मांगोगे, दिल से मांगोगे और अगर आपने मेहनत करी होगी तो वो चीज़ आपको मिलनी ही है. तो दैट टाइम फिर SFM का पेपर भी निकल गया. सही निकल गया नहीं, 74 मार्क्स आए हैं. सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इन दी 8 पेपर्स. 8 पेपर्स में से सेकंड हाईएस्ट SFM में, even though there was a panic. But let's take some moral out of the story. Number 1, when he saw the paper initially, he was already कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, having confusion. देखे हुए हैं लेकिन पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे. Number 1, ऐसे thoughts if you can avoid and keep the confidence and honestly start with the question which you know most. जो सबसे पहले जो आता है उससे शुरुआत करनी है और फिर आपका फ्लो बनता जाएगा. Number 2, then second very important thing was that 70 marks paper in 2.5 hours and 30 minutes 30 marks, and he was able to do that because he believed, he prayed to God. हमारे भगवान लोग सुन रहे हैं, अगर आपने दिल से जो है उनको माना है और आपने अगर अच्छे से मेहनत की है तो God helps those who help themselves. You have helped yourself, you have prepared. तो अल्टीमेटली भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी. ये थॉट्स जो हैं कि भाई ये चैलेंज है एंड पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं, मुझे करना है, भगवान मेरी मदद करो, मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है, एंड अल्टीमेटली getting, you see, second highest score in the entire 8 papers. That's the good part. Then apart from that, learning अगर लें तो not giving up. कि भाई बीच में ऐसे thoughts आते हैं तो कई बार क्या होता है, नहीं भाई मैं जा रहा हूँ. Honestly, I've seen students leave examination hall, 1 घंटे तक जाने नहीं देते, वो 1 घंटे बाद चले गए कि नहीं यार हम नहीं कर रहे, और उसे 1 घंटे का बाद जब उनका रिजल्ट आया तो दे वर ऑलमोस्ट पास, कि 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट पास. मैंने ऐसे बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, ऐसे बच्चे आए हुए हैं कि जी सर पता नहीं पैनिक हो गया बिल्कुल ना, आई वॉज पैनिक स्ट्रक, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्यूज सा हो गया और आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट. आई वॉज लाइक मेरे से अब नहीं हो पा रहा, जो मैंने कर लिया 1 घंटा बस मैंने बैठ लिया, जितना आता था जो सबसे ज्यादा आता था बस मैंने देखा और मैंने कहा बस मैं जा रहा हूँ. एंड देन इट वॉज नियर 1 hour. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि कह रहे थे कि जी हम तो गए भैया, तुम 1 घंटा और बैठते, 1 घंटा और बैठते, 2 घंटे टोटल बैठ जाते तो भी निकल जाता. Anyhow, so ultimately not giving up and believing in yourself, believing in God, very important. Some morals. आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद आपका घर पे रिएक्शन क्या था? मम्मी का, पापा का? मम्मी पापा दोनों घर पे थे. Your brother is also doing CA, right? So वो he has his attempt next. So CA final का attempt है उसका, अभी next attempt है. But let me ask you, what was the reaction when your parents saw the result? क्या था उनकी? पहली चीज तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो होगी लड़का फाउंडेशन में रैंक लाया है, इंटर में रैंक लाया है, फाइनल में भी लाएगा. तो what did they do when they saw the result? So as you rightly said, I was a rank holder in foundation, then in intermediate. So but obvious, everyone was expecting me to get a rank this time. But frankly speaking, none of my parents or grandparents or anybody in the family put any sort of pressure on me that I have to score a rank this time also. Whenever I felt any pressure from external society to score a rank, they used to calm me down कि चलो कोई बात नहीं, पास होना इज इम्पोर्टेंट, CA बनना इज इम्पोर्टेंट, रैंक वैंक इज अ सेकेंडरी थिंग, आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं. So on the date of my result, after the completion of my exams, they went quite decent. So I was expecting कि आ भी सकती है रैंक. तो on the date of my result, that is on 9th of January 2024. So me and my brother, we both have a habit of watching each other's result first. So I watch my brother's result and he sees my result, and then we declare it to the other person and the family. So from the very morning itself, right, I guess from
7 or 8 in the morning, we had opened that ica.nic.in website, and we were refreshing it continuously कि कभी किसी time result आ जाएगा. Eventually, I guess around 10:50, the results were declared. So my brother had my roll number and registration number, so he typed it. So he had the laptop screen in front of his face. So he not straight away, but he gave me some hints कि एक अच्छी news है, खराब news है, ऐसा है वैसा है. He tried to give me hints कि so that I can predict my own result. So I still remember he said to me, I give you a number that is 72 and you decide, you tell me what the result can be. So I tried guessing कि इसके significance क्या होगा 72 का. So I took 3, 4, 5 attempts कि क्या हो सकता है मेरा result. He tried giving me more and more hints so that I can actually make out my result. So that significance of 72 was कि I had scored rank 13 in my foundation, then 40th in my intermediate. So 13 plus 40 plus x equals to 72. So that x would be my CA final rank. So I ultimately guessed it right. It was 19th rank. Then whenever we see the results, so we normally close the door of a room so that no one can come inside, and eventually we tell the result, disclose the result to other family members. So on that day, on that particular moment, only my mother was there in the home, Papa was there in the office, and grandparents were also not there at home. So मम्मी जब रूम में आई, she realized कि result आज is declared, and they both know my result. So my brother initially told my mother that he had qualified his CA, he has become a chartered accountant, but he has not scored a rank. So मैंने भी कोशिश करी मम्मी के सामने थोड़ी एक्टिंग करने की कि हाँ थोड़ा अपसेट सा हूँ, बट चलो CA बन गया. So my brother tried to just मुझे थोड़ा शांत करवाने की कि बहुत अच्छी बात है CA बन गए, इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार इन माई लाइफ, बहुत अच्छी बात है, लेट्स टेल दिस टू एवरीबडी एंड लेट्स सेलिब्रेट. तो बट शी थॉट कि या वी वर एक्चुअली telling her the truth that I have not got a rank this time but qualified as a CA. But my father had also my admit card. He took it one day prior to the date of my result, so he was in office, so he had also seen my result in his own system. So he called my mother and told me ultimately that not just have just qualified my exams and become a chartered accountant, but also have secured all India rank this time again. So my mother got to know my rank from my father. Then eventually we like all started celebrating. Then I called my grandparents and everyone was very happy, very happy, and that's probably the most exciting happiness that I may have given to my parents, grandparents so far in my 22-23 years of existence. So nice, so nice. So you also choose to be successful and work for it and give your parents this excitement and happiness. It's very important. Now अब CA की जर्नी में आपको किसने हेल्प किया? जैसे अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स दिख गए, आउटसाइड ऑफ योर फैमिली डिड समबडी हेल्प यू टू बिकम अ CA? मतलब गाइड किया, व्हाटएवर, इफ समबडी गाइडेड यू कि ओके ऐसे करना चाहिए या समथिंग, एनीथिंग? So apart from parents, if I talk about teachers, so स्टार्टिंग में आशीष कालरा सर इसलिए नहीं कि साइड में बैठे हैं बस, बट इसलिए भी कि genuinely he had a role in my entire CA curriculum. I can recall my first physical meet up with Ashish Kalra sir. That was in October 2021. That was a prize distribution ceremony of IGP. So I was also invited for that event, and post completion of that event, when awards were distributed to students, I alongside my father, we both visited Ashish sir to meet him at the stage. Then I discussed with him very frankly. That time I think I was studying costing, that is paper number 5 of CA final. So I very frankly, candidly told sir कि देखो सर मैं क्लास तो ले रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, सिंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हमारा ऑफिस होता है एंड उसके बाद पढ़ाई करने का इतना मन करता नहीं, एंड वेरी फ्रैंकली मैं क्लास देख रहा हूँ, आपकी ही देख रहा हूँ, बट उतना मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, मैं सर को बोल दिया. तो दैट टाइम सर वॉज लाइक कि एज इफ सर ऑलरेडी न्यू कि कोई लड़का आने वाला है और सेम क्वेश्चन पूछने वाला है, जस्ट बाय द एक्सप्रेशंस ऑफ माइंड दैट टाइम. सो सर गेव मी दैट टाइम, सर ने मेरे को प्रॉपर डिटेल्ड प्लान बताया कि फ्रॉम मॉर्निंग टू किस टाइम मैं उठ सकता हूँ, कितने टाइम का मेरा ऑफिस होता होगा, देन उसके बाद किस टाइम मैं पढ़ सकता हूँ और कैसे कैसे कर सकता हूँ.
So that was a good schedule, but I never expected कि मैं instantly एक random सा question सर से पूछूंगा और वो मेरे को instant answer दे देंगे. So by that day I had already been studying costing since last 2.5 to 3 months, and I had only covered I guess 40 to 50% of my syllabus. But after following sir's schedule, subject to some adjustments according to my own routine, I was able to complete the remaining 50-60% of my syllabus in the next 1 to 1.5 months by working efficiently. So that was some sir's contribution towards my study period. Then next, I would like to mention Harsh Gupta sir as well. I took again law classes in intermediate from Harsh Gupta sir. उसके बाद that time sir was not teaching in CA final, but sir had told us in the class itself कि वो आने वाले हैं CA final में. तो I was after studying from Harsh sir, I was very confident कि even though जब मैं CA final में जाऊँ, एंड उस टाइम सर की हो सकता है 1-2 लेक्चर्स ही हुए होंगे सर के, सर बहुत नए रहे होंगे उस टाइम CA फाइनल में, but still I would definitely take classes from again Harsh Gupta sir only, despite the fact that he is very new to CA final. So eventually I guess in 2022 May or June something, I took my law classes from Harsh Gupta sir, and during my study leave period also, that is the last 5 months of my CA final preparation time, I watched a sir from YouTube to revise my subjects, and from top to bottom revision of all the chapters, and I relied on him completely. And ultimately till very last day of my exam, both Kalra sir, Harsh Gupta sir, both had utmost support for not just me, for all the students who are taking classes from them. So that helped me a lot in cracking these exams with flying colors. Great. Thank you so much. Thank you for this, these words, kind words as well as good feedback. I'm so glad. Now, जल्दी कुछ चीजें और लास्ट में कंक्लूजन में पूछ लेते हैं. अब जब आपने CA की जैसे इंटरमीडिएट क्लियर किया, तो आपने आर्टिकलशिप में क्या सोचा और इन लोगों को क्या रिकमेंड करोगे कि आर्टिकलशिप में क्या करें, कहाँ जाएं? आपने कौन सा जो है स्पेशलाइजेशन अगर किया, कौन सी फर्म में किया, और अब आफ्टर क्वालिफाइंग अभी ऑब्वियसली अभी आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी रहती है. ये लोग की तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद इनके फाइनल के पेपर होंगे. आपके तो अभी साथ के साथ होते हैं, बिकॉज 3 इयर्स में फिर थोड़ा स्टडी लीव पीरियड होता है अभी प्रेजेंट सिस्टम में. तो इसीलिए ICAI ने अब इन लोगों को कहा CA के बाद जो है सेकंड 2 इयर्स के बाद करना. सो विच स्ट्रीम डिड यू चूज, which firm did you join, and what would you recommend these students who are watching us कि भाई क्या करना चाहिए after they qualify, because soon enough they'll be through with their intermediate. They are all, जितने भी यहाँ बैठे हैं ये सारे both groups दे रहे हैं. तो ये most of them, मतलब very rare जो है सिर्फ एक ग्रुप दे रहे होंगे. Most of them are giving both the groups. So guide them, and afterwards, after qualifying, now that you're a chartered accountant, which stream do you want to go into? Corporates? Do you want to go for a firm? अपनी practice करनी है, India रहना है, बाहर जाना है, and so on. I got my CA intermediate result in Feb 2021. So after my result, since I got a rank, I was expecting कि I'll get calls from number of big firms. So eventually, yeah, it happened. So I got options for pursuing my articleship in statutory audit domain from KPMG, then in internal audit domain from EY, then indirect tax domain from BDO, and multiple other firms as well. So ultimately, I opted for statutory audit from KPMG in Gurugram. So my articleship, as far as my articleship exposure is concerned, I would say that I am quite lucky to do my articleship in statutory audit. Of course, since I'm doing it in audit, so I would advocate for audit only. But audit has given me exposure. Many times we do have a perception when we are students कि यार हम सब ने ऐसा सुना होता है कि यार इसमें अगर इस फर्म से आर्टिकलशिप करोगे, इस बड़ी फर्म से, तो वहाँ पे बस तुम्हें ये एरिया करने को मिलेगा, वो करने को मिलेगा. मतलब since we are not practically exposed to these firms, so we have a perception which we get from our surroundings.
सो जब मैंने ऑडिट स्टार्ट करी, सो द स्टार्टिंग 5-6 मंथ्स पीरियड इज लाइक क्वाइट वो वाला कि आपको रूटीन बेस्ड जॉब्स मिल रहे हैं, आपको टास्क असाइन हो रहे हैं अपने सीनियर से जो दैट यू हैव टू कंप्लीट विद इन द टाइम असाइन टू यू. सो बट इवेंचुअली इन ऑडिट I was able to nurture my skills, exposed to critical, challenging tasks, and ultimately to handle critical, mid-sized to big engagements on my own. So my audit experience was very good, is very good actually, and वैसे there are multiple fields to choose from for articleship. Like there are audit, there is taxation, there is transfer pricing, there is आज के डेट में there are M&A and deal advisory, then FDD, multiple options. But मेरा audit का experience is very good. So if you are getting in audit, if you are getting chance to do it in audit, then there cannot be a better thing to do. So I got it in audit. I consider myself lucky for that. And you can have a motivation to get good marks so that big firms approach you actually. You'll get recognition, you'll get brand, you'll get learnings a lot, you'll definitely not get work-life balance, that's a separate thing, but yes, you'll get practical exposure plus good stipend plus recognition, everything. So I would recommend or suggest everyone to work hard to secure good marks, to crack it in first attempt or very less number of attempts, so that you increase your chances of doing it from a good firm, big firm. So that is my articleship thing. So right now, just since I've already qualified, so the question as everyone asks me ki what's the next plan agega. So since I very recently qualified, so right now I am exploring opportunities. Of course I do have an option to continue at KPMG itself. They do offer quite decent amount and exposure when we qualify, plus we do have that sort of advantage since we have already done our articleship from the same firm. So they'll like offer us early promotions and everything, but at the same time exploring other fields as well. I'm exploring like investment banking opportunities. Many other companies have also started approaching me in diverse number of fields. So right now I'm quite clear that right now I am not in a position to have my own practice at least. So it's a bit of choice to make for me whether to continue with the firm in audit itself or to explore other fields. So right now I'm in that position of exploring itself. Good, great. So clear your exams, preferably in your first attempt, get good marks, और साथ में try for a bigger firm, अच्छी firm से करो, stipend भी अच्छा है as well as exposure तो है ही है, और फिर उसके बाद अगर आप फाइनल भी अच्छे से निकाल पाओ तो यू गेट गुड ऑफर्स एंड गुड अपॉर्चुनिटीज. ही विल बी गोइंग फॉर द कैंपस ऑल्सो एंड लेट्स सी बाय द टाइम, क्योंकि अभी 3 महीने की आर्टिकलशिप रहती है. आई होप कि सबको यू गॉट सम गुड इनसाइट्स आपकी अपनी प्लानिंग के लिए, आपकी अपनी प्रिपरेशन के लिए. क्योंकि देखिए ऐसा है, CA कोर्स इज एन ईजी कोर्स फॉर दोज हु आर डिसिप्लिन्ड, आर कंसिस्टेंट, believe in themselves, plan their work and work their plan. Simple. That's it. So thank you, Akash. Thank you so much for coming over here.